Hello students. So in this video we are going to discuss the questions based on magnetism and matter. यहाँ पे हम लोग जेई मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले इस चैप्टर में ऑन मैग्नेटिज्म कॉन्सेप्ट एंड मैटर. तो चले मूव करते हैं पहले क्वेश्चन पे. So in this question what is given? Which of the following statements are correct? यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए हैं और हमें बताना है कि कौन सा इसमें करेक्ट है. नाउ व्हाट इज स्टेटमेंट ए? यहाँ पे ईच स्टेटमेंट वाइज जाते हैं. तो स्टेटमेंट ए में क्या दिया देखिए, इलेक्ट्रिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट वेयर एज मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट. ना स्टूडेंट्स देखिए, मैग्नेट हमेशा पोल्स उसमें होते हैं, राइट? तो इट इज ऑलवेज इन पेयर. अगर आप एक मैग्नेट कोई भी ड्रॉ करेंगे तो आप हमेशा उसको देखेंगे कि उसमें दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. तो मैग्नेट हमेशा डाईपोल मतलब पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, उसके हमेशा डाईपोल्स होते हैं. आप कितना भी कट ब्रेक डाउन करें वो मोनोपोल हो ही नहीं सकते. तो इसका मतलब स्टेटमेंट ए इज इनकरेक्ट. स्टेटमेंट ए इज इनकरेक्ट. अब आ जाते हैं बी पे. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ सोलेनोइड एट इट्स एंड एंड आउटसाइड कैन नॉट बी कंप्लीटली स्ट्रेट एंड कन्फाइंड. ना इसका मतलब क्या? अगर आप सोलेनोइड की बात करें तो सोलेनोइड में रॉड होता है एंड देन देयर आर टर्न्स. इसमें मैग्नेटिक लाइंस जो होते हैं दे एंटर फ्रॉम वन एंड एंड दे एग्जिट फ्रॉम द अदर एंड, राइट? Yes or no? So in solenoid both the ends, okay, they have two ends and they are separate. दोनों ends joined नहीं है. Okay, so magnetic fields कभी भी confined नहीं हो सकते. So magnetic fields cannot be confined. So statement B is also incorrect. Statement C पे आ जाते हैं. Magnetic lines are completely confined within a toroid. Yes, magnetic lines confined होते हैं क्योंकि टोरॉइड सर्कुलर है तो उसके एंड्स होते नहीं है, इट इज एंड टू एंड क्लोज्ड. तो उसमें जो मैग्नेटिक लाइंस है वो थ्रू दी टोरॉइड अंदर ही अंदर ट्रैवल करते हैं. सो मैग्नेटिक फील्ड थ्रू टोरॉइड कन्फाइंड होते हैं. तो सी इज करेक्ट. आ जाते हैं डी पे. मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड अ बार मैग्नेट आर नॉट पैरेलल. सबको पता है कि इनसाइड अ बार मैग्नेट द मैग्नेटिक लाइंस ऑलवेज एंटर फ्रॉम द साउथ. सपोज साउथ है या नॉर्थ है, इट गोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पैरेलली. हाँ, वो नॉर्थ टू साउथ सर्कुलर वे में जाता है बट साउथ टू नॉर्थ पैरेलली जाता है. तो डी अगेन क्या हो जाएगा हमारा? इनकरेक्ट. एंड देन वी हैव कॉन्सेप्ट ई. मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज -1 फॉर अ परफेक्टली डायमैग्नेटिक मटेरियल. यस, क्योंकि फॉर डायमैग्नेटिक मटेरियल वीकली रिपेल करते हैं. ओके, सो क्योंकि वीकली रिपेल करते मैग्नेट को तो वो उनकी ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होती है. सो ई भी हो गया करेक्ट. सो हमारे पास सी एंड ई है जो करेक्ट है. तो करेक्ट ऑप्शन हमारा आएगा ए. आई होप स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड. मूविंग एड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स. क्या दिया देखिए, अ स्मॉल बार मैग्नेट प्लेस्ड विद इट्स एक्सिस at 30 degree with the external field. So axis of a bar magnet is making an angle of 30 degree. So theta equals 30 degree. This is angle made by axis with external magnetic field. Okay. Magnetic field का वैल्यू दिया है हमें, कितना है? 0.06 टेस्ला. एंड एक्सपीरियंस और टॉर्क, ओके, टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है कितना? 0.018 न्यूटन मीटर. द मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड टू रोटेट इट फ्रॉम स्टेबल टू अनस्टेबल पोजीशन इज. तो हमें वर्क डन निकालना है फ्रॉम स्टेबल टू अनस्टेबल पोजीशन. तो स्टेबल पोजीशन के लिए पैरेलल, जब तुम्हारा एक्सिस पैरेलल होता है यानी थीटा कितना होगा? 0. अनस्टेबल के लिए इट इज ऑपोजिट यानी 180 एंटी पैरेलल. तो टॉर्क, तो वर्क डन क्या फॉर्मूला आता है हमारे पास? वर्क डन का फॉर्मूला आता है mb cos θ1 माइनस cos θ2. ना मैग्नेटिक फील्ड तो दिया है बट मैग्नेटिक मोमेंट नहीं दिया है. तो टॉर्क के फॉर्मूले से mb sin थीटा, तो m विल बी इक्वल टू टॉर्क अपॉन b sin थीटा.
तो टॉर्क हमारा कितना है 0.018, वी कितना है 0.06 इंटू साइन थीटा। थीटा हमारा इनिशियली कितना 30, साइन 30 इज हाफ, हाफ यानी टू ऊपर चला जाएगा, 6 1 जा 6, 3 जा 3, 2 जा 6, सॉरी 6 1 जा 6, 0.3 जा, क्योंकि यहाँ पे और एक जीरो आ रहा है और टू हो गया, तो ये 0.6 एम्पियर मीटर आ गया। ओके, सो ना वर्क डन निकालते हैं, एम बी कॉस अनस्टेबल, सॉरी स्टेबल माइनस कॉस अनस्टेबल, तो एम इज 0.6, बी 0.06, कॉस 0 यानी 1, सॉरी कॉस 0 माइनस कॉस 180, so this will be 6 6 the 36, कितना डेसिमल 1 2 3, तो 1 2 1 0, this is 1 minus 1, so this is 0.036 into 2, तो 0.072 जूल्स। ओके, सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7.2 इंटू 10⁻⁻²। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा बी। आई होप स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड इट। ओके स्टूडेंट्स, मूविंग अहेड। ना क्या दिया, देखिए, अ स्मॉल सर्कुलर लूप ऑफ कंडक्टिंग वायर हैज अ रेडियस ऑफ ए। ओके, सो हमें यहाँ पे रेडियस दे दिया है, आर नहीं है, रेडियस इज इक्वल टू ए, carries a current I, is placed in a uniform magnetic field perpendicular to the plane, okay, to the plane such that when rotated slightly about its diameter, तो coil, अच्छा ये हमारा जो coil है, ring है, इट्स अ फॉर्म ऑफ रिंग, और ये डायमीटर के थ्रू इसको ऐसे रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, and release it starts performing simple harmonic motion of time period t, the mass of the loop is m, तो टाइम पीरियड हमें निकालना है, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन m इंटू बी, वेयर m इज मैग्नेटिक मोमेंट, और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या है, करंट इंटू एरिया, करंट इंटू एरिया, करंट आई है, एरिया इज पाई ए स्क्वायर, सो हो जाएगा पाई ए स्क्वायर आई, मैग्नेटिक मोमेंट दिया है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, now moment of inertia about diameter, so that is half m r square, so half m a square हो गया, तो दोनों वैल्यू डाल दो, तो टाइम पीरियड विल बी 2 पाई अंडर रूट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज हाफ, सो 1/2 m a square, एंड मोमेंट मास स्मॉल m, सॉरी मास स्मॉल m है, स्मॉल m ले लेते हैं, ओके, और 2 m का वैल्यू कितना आता, पाई ए स्क्वायर आए इंटू मैग्नेटिक फील्ड भी है, ए स्क्वायर गेट्स कैंसल्ड, सो जो फाइनल आंसर है हमारे पास टाइम पीरियड का, दैट इज 2 पाई अंडर रूट, न्यूमरेटर में m अपॉन डिनोमिनेटर में 2 पाई i इंटू बी, अगर मैं 2 पाई अंदर ले लूँ तो ये हो जाएगा अंडर रूट 4 पाई स्क्वायर m 2 पाई i b, सो पाई एक पाई कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 जा, सो न्यूमरेटर में आएगा 2 पाई m अपॉन i इंटू बी, सो 2 पाई m अपॉन i इंटू बी, सो हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी। आई होप स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। Okay students, moving ahead with the next question. A magnetic needle of magnetic moment 6.7 into 10⁻²। So magnetic moment दिया है, magnetic moment, okay, so capital M equals 6.7 into 10⁻² ampere meter square, and a moment of inertia is given 7.5 into 10⁻⁻6 kg meter square, is performing simple harmonic oscillation in a magnetic field. So magnetic field is given 0.01 Tesla. Time taken to complete, we have to find time for 10 oscillation.
So we'll first find out time period, that is time taken to one oscillation, and then we'll multiply it by 10. So time is t equal to pi I upon mb. So 2 pi under root moment of inertia is 7.5 into 10 raised to power minus 6 upon 6.7 into 10 raised to minus 2. Magnetic field is 10 raised to minus 2. We can take it as 10 raised to minus 2 Tesla also. So that will become 2 pi under root 7.5 upon 6.7 into. Now minus 2 minus 2 is minus 4. In numerator will be plus 4. Plus 4 and minus 6 is minus 2. And root के बाहर वो हो जाएगा 10 raised to minus 1. 2 pi is 6.28 into. Now this will see it is under root of approximately 1 point something. So if you'll divide 7.5 divide by 6.7, that will be approximately 1.1194 into 10 raised to minus 1 will multiply over here. So this will become 0.62. 0.628 into. Now 1.11 square root if you'll take, that is approximately 1.058. So if you multiply, this will be approximately 0.644. So this is for one oscillation. So time will be 0.6644 into 10, that is 6.64 seconds, that is for 10 oscillation. 6.6, that is option number D. I hope students you have understood. Next question students, the magnetic lines of force inside a bar magnet, yeah, they all travel from south pole to north pole. So this is, I think it's a very simple question. North pole to south pole, no, because from north pole they emerge. If we take a bar magnet, this is north pole and south pole. Lines outside they will travel from north to south, but inside they will travel from south to north pole. So they travel from south pole to north pole, that is correct option is D. So this was a very easy question. So that okay, moving ahead with the next question students. A magnetic needle is kept in a non-uniform magnetic field. It experiences a torque but not a force, neither a force nor a torque, a force and a torque, a force but not a torque. Now see students, see the magnetic needle always gets aligned in the north-south direction, but it will be only aligning in north-south when the field is uniform. If the field is non-uniform, that means somewhere the magnetic field is stronger, somewhere the magnetic field is weaker. So it will experience, magnetic needle will experience a force, that is right, it will experience a force, and when force acts on it, it will rotate also, so and a torque also, so it will also acted upon by a torque. So my correct option is C. So these are some direct questions students, since the numeric chapter is very easy, so some questions will be direct questions, so you need to understand that question. Okay students, so in the next question what is given, in a uniform magnetic field the magnetic needle has a magnetic moment, so magnetic dipole moment is 9.85 to 10 to the power minus 2 ampere per meter. Magnetic moment, so it is ampere meter square students, and the moment of inertia is 5 into 10 raised to minus 6 kg per kg meter square, and it performs 10 complete oscillation in 5 seconds. So my time period will be, so for one oscillation it will be how much? So it performs 10 oscillation in 5 seconds. So number of oscillation is 10 and time is 5. So so for every oscillation it will take 5 upon 10, that is 0.5 seconds for each oscillations. The magnitude of magnetic field, so you have to find the magnetic field. So this is a direct question,
So time period is 2 pi under root I upon mb. So we'll take square. So t square equals 4 pi square I upon mb. So magnetic field will be 4 pi square I upon m into time period. So 4 pi square they are already given, take it as 9.85 into moment of inertia is 5 into 10 raised to minus 6. Magnetic dipole moment is 9.85 10 to the power minus 2 into time period is 0.5. So 9.85 9.85 cancel. 0.5 ones are 10s are, so 10 power 1. So we have 4 into, this is 1 and minus 6 is minus 5. Numerator minus 2 will become plus 2. So that will be minus 5 plus 2 is 10 raised to minus 7. Sorry students, there is a mistake. Time period is square ना, so 0.5 का स्क्वायर तो 0.25 हो जाएगा. सो ये हो गया 1 ज़ा और ये हो गया 20 ज़ा. So 4 2s are 8 and 10 to the power 1 will go here minus 5. So 8, so minus 5, minus will become plus 2, so it will become 10, 2 and 1 3, 3 minus 6 is minus 3 Tesla. So final answer is 8 into 10 raised to minus 3 Tesla. I hope students you have understood the question. Moving ahead with the next numerical, students, choose the correct option. True dip is not mathematically related to apparent dip. True dip is less than apparent dip. True dip is always greater than the apparent dip. And true dip is always equal to apparent dip. Now, students, हमारे पास formula है that tangent of apparent dip is equal to tangent of true dip upon cos of angle, where alpha is angle made by vertical plane, angle made by vertical plane with magnetic meridian. Magnetic meridian. Now, see, cos alpha का value will always be less than or equal to 1. वो 1 से ज़्यादा हो नहीं सकता. So, tan of apparent dip will always be greater than equal to tangent of true dip, right? So angle of apparent dip will be greater than angle of true dip. So true dip is always less than apparent dip. So हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है B. So correct option is B. I hope students you have understood this question. Okay students, moving ahead with the next question. हमारे पास क्या दिया देखिए. At an angle of 30 degree to the magnetic meridian, the apparent dip. So rho dash equals 45 degree and हमें true dip निकालना है और हमारा एंगल थीटा कितना है 45 डिग्री. तो हमारे पास apparent dip tan phi dash equals bv upon bh cos theta, bv upon bh tan tan del रो हो जाएगा. सो tan रो डैश हमें कितना है 45 डिग्री, bv अपॉन bh cos कितना है 30. cos 30 कितना था √3/2 और tan 45 कितना था 1. So 1 bv upon bh √3/2. So bh √3/2 will be bv. राइट, तो हमें bv का वैल्यू मिल गया. अभी ट्रू डिप क्या आएगा, tan डेल्टा इक्वल्स bv अपॉन bh. सो tan डेल्टा विल बी bv कितना है
BH root 3 by 2 upon BH. BH and BH cancel. So delta will be tan inverse root 3 upon 2. So tan inverse root t upon 2, that is correct option is D. I hope students you have understood the question. Okay students, we'll move ahead with the next question. क्या दिया देखिए, the length of a magnet is large compared to its width and breadth. The time period of oscillation in a vibration magnetometer is, so time period दे दिया initially 2 seconds. Okay, the magnet is cut along its path into 3 equal parts, and the 3 parts are then placed on each other with the like poles together. The time period of the combination will be, okay. So initially time period का formula क्या होता है, 2 pi under root I upon mb. I is moment of inertia. Moment of inertia for magnet suspended होगा तो along the length. So ml square by 12 होता है. Now, क्योंकि इसको 3 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिए तो मेरा लेंथ भी 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. सो माय l dash will be l by 3 each length and mass m dash will be m by 3. So my new moment of inertia will be 1 by 12 into mass कितना होगा m by 3, l square तो l by 3 the square into 3. ये तीनों एक के ऊपर एक रखे हुए हैं. सो ये हो जाएगा, एक 3 और 3 कैंसिल, सॉरी ये 12 है, 1 बाई 12 ml स्क्वायर बाय 9. बट 1 बाई 12 ml स्क्वायर क्या आएगा, हमारा I है. सो न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी I डैश विल बी I बाय 9. सो माय टाइम पीरियड विल बी 2 पाई अंडर रूट I बाय 9 अपॉन mb. सो 1 बाय 9 तो 1 बाय 3 बाहर, 2 pi under root I upon mb. So 1 by 3 of 2 t हो जाएगा, but t dash equals 1 by 3. इनिशियल टाइम पीरियड कितना है 2, तो जाएगा 2 by 3 seconds. That is correct option is B. I hope you understood students. Okay students, we'll move ahead with the next numerical. Now whatever you are given here is, a magnetic compass needle oscillates 30 times per minute. Okay, so oscillation is 13 times per minute at a place where the dip is 45 degree. The angle of dip, suppose you take it as delta. Delta is angle of dip is 45 degree at initial place, and 40 times per minute where the dip is 30 degree. अच्छा, so dip 45 है, वहाँ पे मेरा time period कितना हो जाएगा, t is time period t1. So time period of oscillation तो कितना है 30 टाइम्स पर मिनट. सो 1 मिनट में कितना टाइम्स, 30 टाइम्स, यानी 2 सेकेंड्स हो जाएंगे. नाउ व्हेन द डिप एंगल इज 30 डिग्री, देन t2 will be, again time period now becomes, now there are 40 times per minute, so 60 by 40, that will be 3 by 2 seconds. Now हम लोग वहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं ना. एंगल ऑफ डिप क्या होता है, ये तुम्हारा हॉरिजॉन्टल और ये हो गया तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया एंगल ऑफ डिप. सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बिकम्स बी कॉस डेल्टा. सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फॉर फर्स्ट it will be b1 cos delta 1. So that is b1 cos delta 1 initial is 45 degree. So cos 45 is 1 by root 2. So b by root 2. This is horizontal component of first. Similarly, horizontal component of second will be b2 cos delta 2. So that will be b2 cos delta 2 is 30. Cos 30 is root 3 by 2. So root 3 by 2 b2. So this is horizontal component of second angle. So b1 and b2 are respectively the total magnetic field due to the earth at the two places
then the ratio of B1 and B2 is given by, so we have found out the magnetic field. Now time period formula is equal to 2 pi under root I upon m into B horizontal component we are taking. Where I is moment of inertia and m is the magnetic moment, magnetic dipole moment. Now since moment of inertia, magnetic dipole moment 2 pi is constant, so time period is inversely proportional to horizontal component. So we have T2 upon T1, that will be under root BH1 upon BH2. So if we'll substitute the value of BH1 and BH2, so time period T2 upon T1 will be under root. Now BH1 is B1 by 2, root 2. So B1 by root 2. And we have BH2 as root 3 B2 by 2, root 3 by 2. So basically it will come as under root B1 upon B2 2 upon root 3 into root 2. This is T2 upon T1. Taking squares, so we have T2 upon T1 the whole square equals 2B1 upon root 3 into root 2 into B2. So we want B1 by B2. So B1 by B2 will be root 3 into root 2 upon 2 into T2 upon T1 the whole square. Now we have the formula for time period. So B1 upon B2, we have the values. So this is root 3 into root 2 upon 2 into, now T2. T2 is 3 by 2. So 3 by 2 the whole square upon T1 is 2. And T1 is 2, so that will be 2 square. So this will be root 3 into root 2 upon 2 into 3 square is 9 by 4 into 2 square is 4. So root 3 into root 2 upon 2 into 9 by 16. Okay, so now here root 2 can be cancelled as root 2 ones are root 2 root 2. So we'll get 9 by 16 into root 3 upon root 2. So we have to just multiply 9 by 16. Root 3 is 1.732 and root 2 is 1.414. So if you'll multiply, this will become in numerator B1 upon B2 15.588 upon 22.624. So if you'll see, it is approximately 15. If you'll take 1 times, it will 15 1.5 times. So if it is 1 upon 1.5 times approximate, that will be around 0.7 approximate Tesla. So B1 upon B2 is 0.71 upon 1 in the ratio. So I hope students you have understood the ratio of B1 upon B2 is 0.7:1. Thank you. Okay students, next question की तरफ बढ़ते हैं. Now next question में भी data क्या दिया देखिए. A thin rectangular magnet suspended freely has a period of oscillation equal to t. Okay. Now it is broken into two equal halves. तो उसका length कितना हो जाएगा? L by 2. And one piece is made to oscillate freely in the same field. If its time period of oscillation is t dash, the ratio of t dash to t is, okay. So initial time period का formula क्या है? 2 pi under root I upon mb. Now m is magnetic dipole moment. So new magnetic dipole moment will be what? Pole strength. Pole strength into dipole length. But dipole length का half हो जाएगा तो L by 2 हो जाएगा.
सो पोलशन इंटू डाइपोल लेंथ तो m होता है, तो ये हो जाएगा m/2. सो न्यू मैग्नेटिक मोमेंट विल बिकम m/2. नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया के केस में तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो कितना होता है ml² / 12. सो 1/12 साइड करते हैं ना, क्योंकि हाफ में डिवाइड हो गया तो मास भी तो हाफ में डिवाइड हो गया, m/2 हो गया, और लेंथ बाय 2 द होल स्क्वायर हो गया. सो 1/12 m l स्क्वायर तो एज इट इज 1/2 एंड 1/4 हो जाएगा 1/8. तो न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया I डैश विल बी I एज इट इज बाय 8, क्योंकि ml²/12 तो I है, हो गया 2. सो मेरा न्यू टाइम पीरियड T डैश will be 2 pi under root I dash upon m dash b. So 2 pi under root I dash is I by 8, m dash is m by 2 and b. तो 2 ones are 2, 4s are 4, रूट से बाहर आएगा तो 2, तो 1/2 बाहर ले लिया, 2 pi अंडर रूट I अपॉन एम बी. तो ये तो मेरा मैग्नेट टाइम पीरियड इनिशियल था, तो T dash will become, this is time period, तो time period by 2. So T dash upon 2 T will be equal to 1/2. So मेरा correct option है B. I hope students you have understood. Okay students, in the next question there are two statements. Statement 1, the ferromagnetic property depends on temperature. At high temperature ferromagnets become paramagnets. At high temperature, the domain wall area of the ferromagnetic substance increases. In the light of the above statement, choose the most appropriate answer. ना पहले तो दोनों statements को समझते हैं हम लोग. Now statement 1 की अगर हम लोग बात करें तो क्या दिया देखिए, the ferromagnetic property depends on temperature, right? So the magnetic property does depends on temperature. So if we increase the temperature, if we increase the temperature, the magnetic property of a substance decreases. So therefore ferromagnetism decreases, and above Curie temperature, ferromagnets gets converted to paramagnet. So statement 1 is true. Now statement 2 देखते हैं. Now होता क्या है कि जब फेरोमैग्नेट को आप हीट करोगे, ओके, तो when heated the atoms absorb thermal energy and they lose their ordered magnetic moment. तो उनका मैग्नेटिक मोमेंट लूज होने से, ऑर्डर्ड मैग्नेटिक मोमेंट लूज होने से उनका मैग्नेटिज्म लूज होता है. तो ये नहीं होता कि डोमेन वॉल एरिया इंक्रीजेस, ऐसा कुछ नहीं होता है. एक्चुअली उनका ऑर्डर्ड मैग्नेटिक मोमेंट लूज होता है. तो स्टेटमेंट 2 हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स. तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स. तो करेक्ट ऑप्शन है ए. आई होप स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स. तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है.
द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ मटेरियल ऑफ अ रॉड इज, तो ससेप्टिबिलिटी यानी काय दे दिया है 499, परमिएबिलिटी इन वैक्यूम यानी म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 h अपॉन m, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ रॉड यानी म्यू का वैल्यू निकालना है। ना देखिए स्टूडेंट्स, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर इज कॉल्ड एज रिलेटिव परमिएबिलिटी, और म्यू आर का जो वैल्यू होता है वो होता है 1 प्लस काएम फॉर मटेरियल, so mu will be equal to mu naught into 1 plus chi m, so it's a direct sub value 4 pi 10 to the power minus 7 1 plus 499, 1 plus 499 is 500 into 4 pi 10 to the power minus 7, 500 into 4 is 2000 pi to 10 to the power minus 7, 3 zeros yani 2 pi 10 to the power minus 4 h by m. So that is correct option is. So this was a very direct question, students. I hope you have understood. Okay, students. In the next question, देखिए क्या दिया, a solenoid of 1000 turns per meter. So what is given? Small n, that is number of turns per unit length. कितना है? 1000 यानी 10 raised to 3. With relative permeability, तो mu r relative permeability दिया है 500. Insulated windings of the solenoid carry an current of, तो current value दिया है 5 ampere. The magnetic flux density produced by the solenoid, that is magnetic flux density का मतलब है magnetic field. तो for a solenoid, magnetic field का फॉर्मूला क्या आता है? म्यू नॉट एन आई, एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नहीं तो म्यू नॉट है, फॉर एनी मीडियम इट विल बिकम म्यू, सोलोनॉइड में पूछा है, बट हमारे पास म्यू का वैल्यू कितना होता है? म्यू नॉट इंटू म्यू आर, तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा? म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एन इंटू आई। चलो हटा देता हूँ, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, तो म्यू नॉट म्यू आर एन आई सब्स्टिट्यूट कर दे, म्यू नॉट इज 4 पाई 10 टू द पावर माइनस 7, म्यू आर इज 500 10 raised to 3 and I is 5. So 2 4 5 4s are 20, 2000 into 5 is 10,000, 4 pi to 10 to the power minus 7 into 10 to the power 3. So 10,000 and 10 to the power 4 pi 10 to the power minus 7 into 10 to the power 3. So 3 plus 4 is 7 minus 7, तो 10 cancel out हो जाएगा, फाइनल आंसर बचेगा पाई टेस्ला. T over here is Tesla. So correct option is A. I hope students you have understood. Okay students, next question की तरफ मूव करते हैं. तो हमें क्या दिया देखें, an iron rod of volume. Okay, तो iron rod जिसकी वॉल्यूम दिया है 10 raised to minus 3 मीटर क्यूब, and relative permeability, तो म्यू आर की वैल्यू दी है 10 raised to 3, 1000 मतलब 10 raised to 3, is placed as core in a solenoid with 10 turns per centimeter. Small n, that is number of turns per unit length, is 10 turns per centimeter, बट हमारा यूनिट मीटर होता है, तो हमें ये टर्न्स पर मिनट और मीटर में कन्वर्ट करना है, तो टर्न्स पर मीटर करना है, तो ये तो 10 था, सेंटीमीटर टू मीटर इज -2, तो -2 ऊपर +2, तो स्मॉल n की वैल्यू जो आएगी वो होगी 10 to the power -3, sorry -2 पर गया +2 and 1 is 10 to the power 3 turns पर मीटर. ओके, करंट जो फ्लो हो रहा है वो 0.5 एम्पियर है, is passed through a solenoid, then the magnetic moment of the rod will be, now magnetic moment of a current carrying coil तो होता है NIA, फिर लेकिन जब हम लोग करंट कैरिंग कॉइल की बात करें तो इस केस में जो सेंटर में होता है वो क्या होता है? एयर होता है, लेकिन यहाँ पे जो सोलोनॉइड है, ओके,
और इस पे तुम्हारे फिर कॉइल्स आ जाएंगे, राइट। सो ये हो गया इसके कॉइल्स, ये हो गया इसका एरिया। यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है उस पर आई है वो 0.5 है। तो जो बीच में एरिया है वो आयन है, तो अभी आयन का रिलेटिव परमिबिलिटी भी दिया है म्यू आर, तो आपका इसमें नंबर ऑफ टर्न्स, सॉरी एन आई ए नहीं होगा, इसके साथ साथ आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रिलेटिव परमिबिलिटी के बीच में एक और मीडियम है। तो एम विल बी इक्वल टू म्यू आर एन आई ए। ना एरिया हमें नहीं दिया है, हमें वॉल्यूम दिया है। इक्वेशन 1 है ना, वॉल्यूम का फॉर्मूला में पता है, वॉल्यूम इज एरिया इनटू लेंथ। सो हमारा एरिया क्या आएगा, वॉल्यूम अपॉन लेंथ। ओके, सो वॉल्यूम अपॉन लेंथ हो गया। सो वॉल्यूम हमें दे दिया है, लेंथ हम कंसीडर करेंगे 1 मीटर, तो एरिया भी मिल गया है। तो अब मेरा जो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला आएगा वो होगा म्यू आर एन आई, एरिया इज वॉल्यूम अपॉन लेंथ। आई होप स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड। सो इसमें हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे तो सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या आएगा, म्यू आर एन आई, एरिया की जगह वॉल्यूम पर यूनिट लेंथ। तो म्यू आर का वैल्यू हमें कितना दिया है 10⁻3, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ भी 10⁻3 है, करंट हमें कितना बोला है 0.5 एम्पियर, इनटू जो वॉल्यूम है वो हमारा 10⁻³ है। सो -3 एंड +3 गेट्स कैंसिल, तो 0.5 इंटू 10⁻3, तो 5 इंटू 10⁻², और वी कैन ऑल्सो राइट इट एज 500 एम्पियर पर, सॉरी एम्पियर मीटर स्क्वायर मोमेंट है ना। तो चेक करते हैं, हमारे पास ऑप्शन ओके बी है क्योंकि 5 इंटू 10⁻² है। So correct option is B. I hope students you have understood. Okay students, moving ahead with the next question. हमें क्या दिया यहाँ पे देखिए, a paramagnetic sample shows a net magnetization. So magnetization is given by mz, कितना है 16 ampere per meter when it is placed in an external magnetic field of, so magnetic field कितना है 0.4 टेस्ला at a temperature of 4 Kelvin. So temperature is equal to capital T equals 4 Kelvin. When the sample is placed in an external magnetic field of 0.3 Tesla, तो ये B1 हो गया, B2 is 0.3 Tesla at a temperature, ओके तो T2 हो गया 24 Kelvin, ये T1 है। Then the magnetization, तो MZ1 हो गया, MZ2 will be how much? Okay. Now from Curie's law हमारे पास तो ये तो पता है, from Curie's law for paramagnetic material that magnetic susceptibility of any material is inversely proportional to temperature, right? Question 1. Also हमारे पास magnetic field equals mu into h है, तो mu will be equal to b upon h, right? Or we have h is equal to b upon mu, right? Also we have mz equals chi h, chi will be equal to mz upon h. ये हो गया इक्वेशन 2 और ये हो गया इक्वेशन 3, दिस इज h. सो फ्रॉम 1 हमारे पास क्या है, सिंस chi is inversely proportional to temperature and chi is equal to what, so therefore mz upon h is inversely proportional to temperature, and h is equal to how much, b upon mu is inversely proportional to temperature, right?
So therefore यहाँ से हमें पास mz will be directly proportional to b upon mu into t हो जाएगा, राइट। एंड ऑलरेडी म्यू क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो mz will be directly proportional to b upon t. So that is a Curie's law. So mz 2 upon mz1 will be equal to b2 upon b1 into t1 upon t2, उल्टा हो जाएगा ना टेम्परेचर। सो मैग्नेटाइजेशन 2 is equal to magnetization of 1 into b2 upon b1 into t1 upon t2। तो सारे वैल्यूज तो दिए हैं हमें। इनिशियल मैग्नेटाइजेशन 6 है, और मैग्नेटिक फील्ड इनिशियली कितना है 0.4, बाद में कितना है 0.3, तो 0.3 अपॉन 0.4 इंटू टेम्परेचर्स, पहले 4 था बाद में 24, so 4 अपॉन 24, इसको 6 इंटू 3 इंटू 4 अपॉन 4 इंटू 24, यहाँ पे मैंने पॉइंट हटा दिया, 4 and 4 गेट्स कैंसिल, तो 18 by 24, so that is mz for second will be 3 by 4। 3 by 4 तो नहीं हमारे पॉइंट में है, तो 3 by 4 यानी 0.75 एम्पियर पर मीटर होगा। सो 0.75 यानी करेक्ट ऑप्शन इज बी। I hope students you have understood. Okay students, so in the next question what is given, a perfectly diamagnetic sphere has a small spherical cavity। तो डायग्राम में यहाँ पे बीच में पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक स्फीयर है, ओके, और वहाँ पे बीच में एक कैविटी है जिसमें पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। द होल सिस्टम इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी एंड द फील्ड इनसाइड द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज, ओके। सो ठीक है, तो हमें पहले क्या दिया है कि एक सब्सटेंस है डायमैग्नेटिक, ओके, और उसके अनदर एक और सब्सटेंस है दैट इज पैरामैग्नेटिक, ओके, एंड दिस इज केप्ट इन एन एक्सटर्नल। तो ये हो गया तुम्हारा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, ओके, और ये है डायमैग्नेटिक, और ये एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। तो क्या होगा, जैसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आएगा, डायमैग्नेटिक रिपेल करता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को, राइट। डायमैग्नेटिक मटेरियल रिपेल्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो उससे क्या होगा कि अंदर की तरफ जो एक्सटर्नल फील्ड होगा वो पहुंचेगा ही नहीं, मैग्नेटिक फील्ड पहुंचेगा ही नहीं, तो द फील्ड इनसाइड द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कितना हो जाएगा, दैट विल बिकम 0। सो सिंस diamagnets repel external magnetic field, okay, so therefore the magnetic field inside the paramagnetic substance is 0। सो यहाँ पे तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो यहाँ लेस देन ऑप्शन है ही नहीं, सीधा 0 है, तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, ओके। I hope students you have understood this question. So we'll move ahead with the next question. Okay students, so next question. A bar magnet is demagnetized by inserting it inside a solenoid of length
Okay, so length of solenoid दिया है 0.2 meter and number of turns is 100 and carrying a current of 5.2 ampere. The coercivity of the bar magnet is. Now what is coercivity? Coercivity. So coercivity क्या होता है? तो coercivity is the value of magnetic field intensity is the value of magnetic field intensity that is needed to reduce the magnetization to reduce the magnetization of bar magnet to जीरो. तो हमें बार मैग्नेट का मैग्नेटाइजेशन क्या करना है? जीरो करना है. तो कितना हमें मैग्नेटिक फील्ड लगेगा ताकि मैं उसका मैग्नेटाइजेशन जीरो कर सकूं? सो फॉर सोलोनॉइड हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला तो पता है, दैट इज magnetic field equals mu naught n into I, where n is number of turns per unit length. Also हमारे पास मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला है, दैट इज mu naught h, राइट? सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है फ्रॉम मैग्नेटाइजेशन b इक्वल्स mu naught. फॉर फ्री वैक्यूम फ्री स्पेस के लिए इट विल बी mu naught h. ये हो गया 2 और ये हो गया 1. सो कंपेयर करेंगे, सो देयरफॉर mu naught h equals mu naught n I. Mu naught cancel, so h is equal to n into I. So h will be n क्या, number of turns per unit length into I. तो number of turns कितना है? 100 per unit length यानी 0.2 into 5.2. तो 1000 into 5.2 upon 2. 2 ones are 2, 2.6 are. So 2600 ampere per meter. So this is the value of coercivity. So यही तुम्हारा वैल्यू है coercivity का. That is correct option is C. I hope students you have understood the question. Okay students, so इस next question में देखते हैं क्या दिया है. A paramagnetic substance in the form of a cube of side. तो हमें साइड दिया है 1 सेंटीमीटर, दैट इज 10⁻² मीटर. तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? साइड क्यूब that is 10⁻6 meter cube has a magnetic dipole moment of 20 into 10⁻6 जूल पर टेस्ला. स्टूडेंट इट्स ओके, जूल पर टेस्ला और एम्पीयर मीटर्स में सेम है क्योंकि ये इन टर्म्स ऑफ टॉर्क के टर्म्स में लिखा है. अच्छा, मैग्नेटिक इंटेंसिटी H की वैल्यू दिया है 60 into 10⁻³ एम्पीयर पर मीटर. इट्स मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी विल बी. तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है? मैग्नेटाइजेशन अपॉन H. सो मैग्नेटाइजेशन क्या होता है? नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम. सो नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज 20 into 10⁻6 पर यूनिट वॉल्यूम. वॉल्यूम साइड क्यूब यानी 10⁻6. तो ये तो हो जाएगा हमारा 20 एम्पियर पर मीटर. मैग्नेटाइजेशन हो गया. सो काय का वैल्यू यू कैन राइट इट एज 20. H कितना है? 60 into 10⁻3. तो 2 ones are 2 3s are. So 1/3 0.33 into 10⁻³ or 3.3 into 10⁻⁻4. So that is our value of magnetic susceptibility. So correct option is A. I hope students you have understood this question. It was very easy. Okay, we'll move ahead with the next question students. क्या दिया देखिए. A paramagnetic material has 10⁻28 atoms per meter cube. So number of atoms per unit volume is 10⁻28 atoms per meter cube. Okay, its magnetic susceptibility is
2.8 into 10 raised to minus 4 when the temperature is 350 Kelvin. So when my temperature is 300 Kelvin, so what will be my magnetic susceptibility? So यहाँ पे number of atoms की हमें ज़रूरत ही नहीं. Magnetic susceptibility is inversely proportional to temperature. Chi2 upon Chi1 is T1 upon T2. Chi2 equals Chi1 T1 upon T2. Chi1 is 2.8 into 10 raised to minus 4. T1 is 350 upon 300. 0, 0 gets cancelled. Okay, so 5 6 are 5 7 are. So we have 7 into 28 upon 6. We can write this as 2 3s are 2, 1.4, 14. So 14 5s are 70, 14 6 are 84, 14 6 are 98. So we have Chi2 as 9.8 upon 3 to 10 to the power minus 4. So 3 3s are 9, 3 2s are 6, 6 into 10 raised to minus 4, or approximately 3.27 10 to the power minus 4 by 2 to 7. So 3 point, okay, 267. That will be our correct option is D. I hope students you have understood the question. Okay students, moving ahead with the next question. The figure gives experimentally measured V versus H in the ferromagnetic material. The retentivity, coercivity and saturation respectively of the materials are. Okay. Now graph तो already दे दिया है. The saturation मतलब जो हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट मैक्सिमम होगा सैचुरेशन हम उसको मैग्नेटाइज करेंगे तो ये तो सैचुरेशन होगा जब तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगा तो ये जो पीक है तो ये हो गया आपका मैक्सिमम सैचुरेशन. ओके, सो सैचुरेशन को डायरेक्टली दिखना है. सो सैचुरेशन का जो वैल्यू है वो है 1.5 टेस्ला. ओके, नेक्स्ट क्या निकालना है? रिटेंटिविटी. रिटेंटिविटी क्या होता है कि जो हम लोग उसको डीमैग्नेटाइज करते हैं, डीमैग्नेटाइज करते वक्त जो मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड रिटेन करेगा वो when my magnetic when coercive when H is equal to 0. So retentivity is the remaining value of magnetic field, the remaining value of magnetic field when H is equal to 0. तो जब हम H को 0 करते हैं, ठीक है, H को 0 करते हैं, मेरा मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 1 टेस्ला. तो retentivity is equal to 1 टेस्ला. एंड कोएर्सिविटी तो हमने पहले भी देखा था. कोएर्सिविटी जब हम लोग फेरोमैग्नेट को पैरामैग्नेट में कन्वर्ट कर दें, मतलब मेरा मैग्नेटिक फील्ड 0. सो द वैल्यू ऑफ H व्हेन मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स 0. सो देख सकते हैं कि जब मैग्नेटिक फील्ड 0 हो रहा है वैल्यू ऑफ H कितना है? 50 है. So coercivity is 50 ampere per meter. So this is retentivity is 1, coercivity 50 and saturation तो 1.5 होगा. So ठीक है, पहला है saturation 1.5, then coercivity 50 and then retentivity 1 Tesla, right? Sorry, 1.5. Saturation is 1.5. So option A, 1 is a retentivity, 50 is your coercivity and 1.5 is a saturation. So correct option is A. I hope students you have understood.
Okay students, moving ahead with the next question. The coercivity of a small magnet, H की वैल्यू दे दी है 3 into 10 raised to 3 ampere per meter, gets demagnetized at this value 3 into 10 raised to 3 ampere per meter. The current required to pass through the solenoid, current हमें निकालना है, number of turns is 100 and length is 10 centimeter. So number of turns per unit length will become, this is number of turns is 100 per 10 centimeter, 100 number of turns per 10 centimeter. So if you multiply by 10, numerator and denominator, that will be 1000 turns per meter, right? So 1000 turns per meter हो जाएगा, number of turns per unit है. Okay. So small n की value मिली है I है. Now magnetic field for a solenoid is mu naught n I, and magnetizing coercivity will be, sorry, B equals mu into H हमें पता है 1. अच्छा थोड़ी देर पहले निकाला स्टूडेंट, सेम क्वेश्चन है. So mu naught H will be mu naught n I, तो H will be equal to n into I. H is equal to स्मॉल n हमारा कितना है 1000 n 10⁻³ और I हमारा निकालना है. ओके सॉरी, H हमें दिया है 3 into 10⁻³ 10⁻³ cancel, तो I will be 3 ampere. So this was a very direct question students. Option is C. I hope you have understood. And 3 are made of a ferromagnetic, paramagnetic and diamagnetic substance respectively. When a magnet, when brought close to them, will, okay, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि N1 is a ferromagnet. तो फेरोमैग्नेट क्या होता है, परमानेंट मैग्नेट होते हैं, और वो क्या करते हैं, दे आर strongly attracted to external magnetic field as they are magnetized in the direction of external magnetic field. Now N2 क्या है, पैरामैग्नेट है. Now paramagnet, they are also attracted, but they are weakly attracted. They are weakly attracted to external magnetic field as they are magnetized in the direction of external magnetic field. And N3 are dimagnetic. That means they weakly repel to external magnetic field as they are magnetized in opposite direction to external magnetic field. So इसका मतलब N1 attract strongly होगा, N2 attract weakly होगा और N3 repel weakly होगा. तो correct option is B. I hope students you have understood. Okay students, so last question. The magnetic material suitable for making electromagnet should have. Now electromagnets बनते किससे? They are made up of soft iron. Electromagnets are made of soft
आयन, दैट मीन्स उनके पास रिटेंटिविटी पावर हाई होनी चाहिए. रिटेंटिविटी should be high. That means वो लोग जल्दी से मैग्नेटाइज्ड होने चाहिए. They should get highly magnetized and have a maximum magnetic property. And उनकी coercivity low होनी चाहिए. That means they should lose their magnetic property very less. मतलब कम से कम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज करनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा गेन करना होना चाहिए. तो रिटेंटिविटी हाई होनी चाहिए बट कोर्सिविटी लो. सो हाई रिटेंटिविटी and low coercivity, any correct option is C. I hope students you have understood the numericals on magnetism. Since it is a very easy chapter, तो इसके numericals थोड़े बहुत easy हो गए आपके लिए. So just basics याद रखना है, थोड़े से concepts. Magnetization, orbital magnetic moments and your last में जो आपका types of magnetic materials, the diamagnet, paramagnet, ferromagnet. तो पे ध्यान दोगे तो these concepts are very easy. I hope students you have understood it.